टोफल सीरीज फॉर द बिगिनर्स का आज हम लेट को स्टडी करेंगे इन डेप्थ. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन. Let is usually added to the list of causative verbs in the grammar textbooks. इससे पहले हमारी चूँकि एक causative verbs की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम causative verbs को in depth study कर चुके हैं. इससे पहले हम have, get और make को study कर चुके हैं. So let is also usually added to the list of causatives in the English grammar textbooks. It is not actually a causative though. It means allow or permit. ये ऐड तो किया जाता है ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स में एज अ कॉजेटिव, बट इट्स नॉट एक्चुअली एन एज अ कॉजेटिव एंड बिकॉज इट सिंपली मीन्स अलाउ और परमिट. हम इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. द वर्ड सब्जेक्ट फॉलोड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय द वर्ड लेट फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट एंड देन वर्ब इन द सिंपल फॉर्म. और अगर हम इसको चूँकि ये इट सिंपली मीन्स अलाउ और परमिट, और अगर हम इन दो लफ्ज़ों से इसको रिप्लेस कर दें लाइक सब्जेक्ट फॉलोड बाय परमिट एंड अलाउ or and then complement followed by verb in infinitive form. That's how the sentence construction will be. If it comes to let, then हम verbs को simple form में use करेंगे, और अगर हम permit और allow को use करते हैं to show the कि आप allow कर रहे हैं permission को या आप इन words को cause show कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको verb infinitive form में इस्तेमाल करना होगा. Let is not interchangeable with leave, which means to go away. Let को आप कभी भी leave के साथ interchange नहीं करेंगे because that simply means to go away. Let is a separate independent word altogether, all alone, right? अब इसको हम examples में further study करते हैं. John let his daughter swim with her friends. So the word let is like followed by a simple verb form. इसमें आप simple allow कर रहे हैं your daughter to get her party done. अगर हम इसको permit और allow के साथ इस्तेमाल करेंगे तो the sentence structure will be John allowed his daughter to swim with her friends. क्योंकि हमने आपको पहले बताया था sentence structures में कि allow परमिट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उस केस में आपके पास जो ग्रामर में जो वर्ब होगा दैट विल बी इन दी इन्फिनेटिव फॉर्म. सो जॉन अलाउड हिज डॉटर टू स्विम विद हर फ्रेंड्स और जॉन परमिटेड हिज डॉटर टू स्विम विद हर फ्रेंड्स. सो अगेन दिस टू स्विम इज इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म विद अलाउ and permit, but when it comes to let, it will be a simple verb form. Another example is the teacher let the students leave class early. The teacher let the students leave class early, or the teacher allow the students to leave class early, or the teacher permit the students to leave the class early. So again, when it comes to allow or permit, तो आपने infinitive verb form use करना है, और when it comes to let, then in that case you have to use simple verb form. Another example is the policeman let the suspect make one phone call. The policeman let the suspect make one phone call. Dr. Jones is letting the students hand in the papers on Monday. So this is like is letting followed by simple verb form in the sentence. Mr. Binion let her son spend the night with a friend. So again simple verb form by after followed by let. We are going to let her write the letter. We are going to let her write her paper. Again let followed by simple verb form. Mr. Brown always lets his children watch cartoons on Saturday mornings. So that's again followed by let followed by a simple verb form. This was all about a simple word let, जिसका जो कि आपका it is considered to be a causative, which is actually not. It simply means to permit, allow. So if you like this video, subscribe to my channel, like and share with your friends and family. Thanks for watching.